Okay, so today we will be starting with matrices part 2 now. As we have already studied in matrices part 1, we have done what was a matrix, properties of matrix, types of matrices, addition, subtraction, and today we will be continuing further with matrix multiplication. What is matrix multiplication? Matrix multiplication has a law which was also discussed in the last class. In that particular last class, I had already given you the first start of matrices multiplication. Irrespective, we did not start with the questions what we would be doing today. So you could make it very easily, follow on the board, and once you try to understand, then we'll be doing it from the assignment also. Now, in case of matrices, what is very clear is the law of matrix. Two matrices can be multiplied if column of first is equal to row of what? Second. Yes, column of first should be equal to row of second. This is the law first of matrices for multiplication. Whatever is left is formed. मैंने क्या बोला? जो बचता है वो बनता है, जो बचता है वो बनता है. Now to understand this simple Hindi converted English, English converted Hindi, let us try to frame a question. Suppose A is a matrix with these elements. It has got 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. If it has got 2 rows and 3 columns, you can see these are the rows and these are the columns. So it is of the matrix, it is of the order 2 into 3. In this case, 3 rows and 3 columns. It is 3 into 3. Now we have to start with matrix multiplication. The question says find AB and BA, means multiply A with B and B with A. सिंपल मैथ्स क्या कहती है? 3 इंटू 4 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है. अगर मैं आपको कहूँ एक एलिमेंट 3 है, एक एलिमेंट 4 है, आप कहोगे 3 इंटू 4 इज 12. मैंने रिवर्स मार दिया, 4 इंटू 3 इज 12. दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन. मैट्रिक्स ऐसा लॉ फॉलो नहीं करता, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं. वो इक्वल आएगा, इक्वल नहीं आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा. इट ऑल डिपेंड्स. इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन विद द गिवन कंडीशन. उसमें कंडीशन क्या है, उसको सॉल्व कैसे करना है. आइए देखते हैं इसको कैसे इसको हम समझ सकते हैं. लेट अस सी ऑन द बोर्ड अगेन. A is being multiplied by B. A is of this order. B is of this order. Now, if I need to multiply A with B, what is very important is 2 into 3 and 3 into 3. Let us come down to the rule first. Column of first should be equal to row of second. This is row, column, row, column. Column of first should be equal to row of second. It will be multiplied. मैंने क्या बोला? जो बचता है, whatever is left is formed. जो बचता है वो बनता है. अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, but I know my answer would be 2 into 3. My answer would be 2 into 3. The answer would be 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. Now the first basic what comes down is how do we multiply. Now to understand the law of multiplication, what is very important, it always follows a right angle law. What is this right angle law? This is what? Row. This is what? Column. So we will move like this. बड़ी सिंपली आपको मैंने बोला इट इज फॉलोइंग राइट एंगल लॉ, रूल, वॉट एवर. दिस इज सिंपल टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज मूविंग. दिस इज अ रो, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ रो एंड दिस इज अ कॉलम. यू विल मल्टीप्लाई इट लाइक दिस. रो विथ कॉलम. होल्ड दिस रो टिल ऑल कॉलम्स आर फिनिश्ड बाय मल्टीप्लीकेशन. This row into first column, then into second, then into third, as the question is. Step down, second row, first column,
second column, third column. Very simple explanation. Now you can see on the board. If I try to copy this question again in this particular boxes, you will find it like this: -1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 0, 2, 3, 1, 5, 4, -1, -2. Yes, the law has to start with multiplication now. A multiplied by B. Yes, A to be multiplied by B. Let us try to see how it would be multiplied. Let us take this first row and first column. You will try to remember, मैंने अभी कुछ ऐसा बोला था आपको. And how this is going to move? Let us see. Element into this plus, this into this plus, this into this. This row with this column, it will be written as -1 into 1 plus this into this plus 2 into 3 plus 3 into 4. First row into first column. क्या बोला था मैंने उसके बाद? Hold the row till all columns finish. First row with first column. Now first row with second column. First row with third column. ये second third कहाँ है? दिए हुए हैं. As per the question, first row into first column. Let us move ahead. First row into second column. It is, I'm just trying to say you are multiplying second column now. So please understand, ऐसा चल रहा है. -1 into 0. Let us go ahead. -1 into 0 plus 2 into 1 plus 3 into -1. Row into first column. Row into second column, row into third column. Very good. Row into third column, row into third column. Correct. -1 into 2 plus 2 into 5 plus 3 into -2. This is how we are going to move. Now we will step down from first row to second row and stick to first column again. We will step down to this second row from first row to second row and stick to first column again. There we go. Second row, first column. If it is second row and first column, it is going to be 4 into 1, 5 into 3, 0 into 4. This is going to be 0 into 4. Now second row again with second column. 4 into 0 plus 5 into 1 plus 0 into -1. Again second row with third column. It will be 4 into 2 plus 5 into 5 plus 0 into -2. This is how we are going to move. And post this, whatever comes is going to be your answer. And you already know, मैंने आपको क्या कहा था? जो बचता है वो बनता है. कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड. इट हैपेंड. ऐसा हुआ. जो बचता है वो बनता है. बना क्या? 2 into 3. आई कैन सी आई हैव 2 rows and after this answers I'll be having 3 columns. So let us come down to the answer now. -1 into this, -1 plus 6 plus 12. नेक्स्ट आपके पास आया 0 plus 2 -3. नेक्स्ट -2 plus 10 -6. नेक्स्ट 4 plus 15 plus 0. 0 plus 5 plus 0. 8 plus 25 plus 0. And we are left with some answer now. And that answer is, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए जिससे आपको थोड़ा सा साफ दिखाई दे वापस, आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू दिस प्लेस अगेन. AB is equal to the desired answer. So it is 18 minus 1, 17. This is 2 minus 3 minus 1, 10 minus 8, 2, 19, 5 and 33. So we are left with 2 rows and 3 columns. So the entire question now on the board,
the entire question now on the board is very simply stated, matrix multiplication. Correct, all my dear friends, it is matrix multiplication what you can see on the board. I will revise it once again before I move down to the another question of the same type, बिल्कुल सेम तरीके से जो आप समझ सकेंगे. आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको एक बारी दोबारा रिवाइज करना. कैसे रिवाइज कर रहे हैं? टू मेट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड. कब? कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड. कॉलम ऑफ फर्स्ट, अगर आप ए बी निकाल रहे हैं, कॉलम ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड. ऐसा था. Whatever is left is formed. Whatever is left is formed. जो बचता है वो बनता है. जो बचता है वो बनता है. This is first outline of matrix multiplication. This matrix multiplication की आउटलाइन को प्रैक्टिकली कैसे डील किया, मैंने आपको बोला आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ वेरी क्लियर, दिस इज राइट एंगल, दिस इज डिनोटिंग रो, दिस इज डिनोटिंग कॉलम. यू विल मेक इट लाइक दिस. ये उनके लिए जिनको लगता है पता नहीं कैसे यहाँ से यहाँ कैसे जाऊँ, ऐसे जाइए आप, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करिए. इसे तब तक होल्ड करिए जब तक सारे पीछे के कॉलम ख़त्म नहीं हो जाते. वो 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, कितने कॉलम है डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर. आपने इस रो को फर्स्ट कॉलम से किया, होल्ड दिस, यू हैव टू गो डाउन टू द सेकेंड वन, देन थर्ड, एंड इट कीप्स ऑन मूविंग. इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस. लेट अस सी ऑन द बोर्ड अगेन. मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी. क्वेश्चन सेज फाइंड ए बी. मैंने ए को बी के साथ लिखा. जब मैंने ए को बी के साथ लिखा, पहला रूल अप्लाई किया, कॉलम ऑफ फर्स्ट, रो ऑफ सेकेंड. करेक्ट. Whatever is left is formed. Okay. How to move? We are going to move like this now. See, please. This is the way. This is the way you're going to move. Row with column. Row with column. और आप क्या करेंगे? -1 into 1 plus 2 into 3 plus 3 into 4. देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा. जो ये है और ये है, ये आपको यहाँ पे आगे ऐसे दिखाई दे रहा है. Please see it nicely. -1 into 1 plus 2 into 3 plus 3 into 4. This is the picture. Hold this row with second column. -1 into 0. नीचे देख सकते हैं आप जो मैं बोल रहा हूं. -1 into 0 plus 2 into 1 plus 3 into -1. There is the picture. Again, I repeat. -1 into 2 plus 2 into 5 plus 3 into -2. Second row, first column. 4 into 1 plus 5 into 3 plus 0 into 4, and so on and so forth. Row with column, keep moving, come down again, first, second, third. Very good. And after this, whatever is the answer is the first law of finding AB. After finding AB, the question still is not ended. The question is still asking you how to find BA now. How to find BA now. I'm going to rub this because this is already clear now. Let us try to go ahead to find BA. If I am going to find BA, if I am going to find B multiplied by A, I will write B first. If I will write B first, this is how it has to be written. This is how it has to be written, and after this I'm going to write A. -1 2 3 4 5 0. Yes, and you should know the order also. The order is 3 into 3. The order is 2 into 3. To find BA, column of first should be equal to row of second. मेरे ख्याल से 3 and 2 are not equal. Column of first is not equal to row of second. तो मैं second को क्या चेक करूं? It will not be multiplied. So this is not possible. And if it is not possible, the question was asking find AB and BA. Also comment on its nature. आपको सर कौन सा nature? Nature आया AB exist, BA does not exist. ये इसका नेचर आया.
This is the nature multiplication of matrices. So this was the first basic what we had to do today to understand matrix multiplication. Now this matrix multiplication का एक basic जो आपके पास board पे है, it is very clear now. I hope you will go through this question first and understand what it has to be done. So for today, what is important? आप पहले इसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे. मैं बोर्ड पे 3-4 क्वेश्चंस लिख रहा हूं जो आपको विजिबल होंगे, जो आप आज घर में ट्राई करेंगे और आप ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब ट्राई कर लेंगे देन वी विल डिस्कस इट फर्दर. So what are those questions now? I am going to write them on the board. I will be also using my assignment also with you. This is what you can see is the booklet. What we would be using now, it is Mathematics 2020 assignment, matrices, which contains each and everything. Very soon I will be sharing this with you. Obviously till the lockdown period is on, you will be finding this on your WhatsApp, you will be getting it in the group, but make sure you make the best use of it. I'll give you the e-notes of these basics. It contains each and everything. So let us move ahead with the questions first. Please let us see कि हम अब घर पे आज क्या questions करने वाले हैं जिससे हमारे को समझ में आए, और NCERT में से भी मैं आपको बताऊंगा आप मल्टीप्लिकेशन क्या खत्म करेंगे, and then we'll move down to the next topic. So I am writing it on the board. Everything is very सिंपल टू अंडरस्टैंड. आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन के लिए बोर्ड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. यू कैन डू इट लेटर. दिस इज अ सिंपल होमवर्क बीइंग गिवन टू यू. व्हाट यू कैन सी, सो द क्वेश्चन फॉलोड आर समथिंग लाइक दिस. दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी. जैसा लिखा है आपने उतना ही फाइंड करना है उसके अंदर वापस. ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू ये दो क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको. बाकी सब काम आपकी शीट्स पे आपसे डिस्कस हो जाएगा. सो फॉर टुडे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस वी कनेक्टेड आफ्टर 2 days. आई वॉज लिटिल बिजी बट येस अगेन बैक टू द क्लास. टुमारो आई विल बी पोस्टिंग अनदर लेक्चर ऑफ द सेम. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद मैथमेटिकल इंडक्शन, ट्रांसपोज कल हम स्टार्ट करेंगे. दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, आगे चलेंगे. टिल देन थैंक यू वेरी मच. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.